Welcome to today's lecture in the same series, that is electrostatic potential and capacitance. So far we have been discussing electric potentials only, and last time we discussed electric potential due to a dipole and also equipotential surfaces like this. And in the series of that we will discuss something about electric potential energy. How we discuss that how they are described, that electrostatic potential energy or electric potential energy of a system is described by the work done in bringing charges from infinity to make a system. Okay, and we will discuss it for many body system and also for two body system. Just for have two body system. Okay, electric potential energy of a system of charges. Here we will discuss system of two charges. Two charges. Okay. The electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at the location, bringing them in from infinity. Therefore, it is not necessary that we take two charges, but maybe many charges. Therefore, sometimes we are explicitly written as two charges, but it is not always necessary. That is why I was not writing that. Okay, now I am again having the same thing, that is electrostatic potential energy for charges. तो कोई भी चार्ज सिस्टम में क्या है कि एक उनको असेंबल करने के लिए इन्फिनिटी से उस सिस्टम तक लाने में जितना वर्क करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेचुरली जब कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वी हैव टू डू सम वर्क. तो जब वर्क करेंगे कहीं ना कहीं किसी फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. यानी कि अगर पोटेंशियल मालूम हो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, तो इफ वी मल्टीप्लाइड दैट विद द चार्ज विच इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, then we can very easily find out the electric potential energy. And electric potential energy in general क्या हो गया, वर्क डन. सौ बात की एक बात ये कि इट इज अ वर्क डन. तो फॉर टू बॉडी सिस्टम, जो हमने यहाँ पे देख रहे सिस्टम, फॉर a system of two bodies, let the charge Q1 is there, already present there. Let Q1 is at a rest position at point P1. रेस्ट पोजीशन मतलब ये इट हैज नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स. तो इसको वर्क करने में कोई वर्क, इनको बाहर से खींच कर लाने में कोई वर्क नहीं करना, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. जो कर रहा है एक दूसरे चार्ज Q2 है, देयर इज अनदर चार्ज Q2 व्हिच हैज टू बी ब्रॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस R12 एट पॉइंट P2. इस चार्ज को Q2 को मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो हमको पहले यहाँ पर मालूम होना चाहिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है. भाई पोटेंशियल मालूम होगा तो पोटेंशियल इनटू चार्ज हम वर्क कर लेंगे. तो यहाँ पर क्या V1, यहाँ पर पोटेंशियल कितना, हाउ मच, इट इज 1/4πε0 Q1/R12. दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P2. इफ Q2 इज मूव्ड इन मतलब कहाँ पर, किसके अंदर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1. इफ Q2 is moved in from infinity to the point P2, then the work done will be W equal to the V1 into Q2. तो पोटेंशियल यहाँ पे मालूम है, into Q2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस मच. अच्छा, आपको मालूम है, आपको हमेशा बताते हैं वर्क करने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, भाई ये तो पहले से स्टेबल पोजीशन में, तो ये अपने आप में जीरो पोजीशन में है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो है. तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, तो V1 माइनस जीरो इज जस्ट V. तो हम लोग वही V को ही हम लोग काउंट कर रहे हैं V1 के हिसाब से. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग खाली V काउंट कर रहे हैं. दैट इंटू Q2, दैट बिकम्स दिस मच, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द वर्क डन in bringing a charge Q2 from infinity. तो अब इसको अगर एनर्जी की फॉर्म में कहेंगे, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस. अच्छा, इसी में हम बिना इसको ज्यादा मिटाए अगर मेनी बॉडी सिस्टम बता दे तो क्या हो जाएगा. मैं डाइपोल के बाद में थोड़ा बता रहा हूँ.
अगर सपोज कर लीजिए देर आर मेनी बॉडीज दिस एक्सेट्रा, देन Q1 Q2 Q3 Q4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, और ये सब भी डिस्टेंसेस होंगे, ये सब भी डिस्टेंस होंगे. Now in this case we can represent it with this is your U12 Q और इनके बीच के जो होगा U12 प्लस U23 इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस U34 इनके बीच जो होगा U34 प्लस U41. इतना काफी नहीं है. Now we have to take diagonal relation also. U13 plus U24. तो ये सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस के केस में भी आप निकाल सकते हैं. हर एक केस में फार्मूला वही है, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R. U equals to is a scalar quantity, energy scalar quantity, and remember if any of the charges is negative, we have to put that negative. Accordingly we add here. Okay, this is how we discuss this. After this we will just continue with the same topic, electric potential. Let me discuss something about the electric potential, that is electric potential of or electric potential energy of an electric dipole when placed in electric field. Now this is your work done in rotating a dipole in electric field. Okay, work done in rotating a dipole in electric field. How is it possible? Until and unless some potential energy is stored in the dipole whenever it is in electric field, and that is the thing which we have to find out. Suppose we are having this as dipole. This may be say AB. Here it is minus Q, plus Q charge is there, and its length is 12. We can very easily observe. It is placed in uniform electric field. The plus charge will experience a force F QE. This is towards the electric field, and minus charge will also it also experience a force QE, but it is directed opposite to electric field due to minus charge. Okay, naturally they will create a torque whenever we have that the angle between electric field and the axis of the dipole is theta at any time, when it's just theta, then the torque applied will be equal to Pe sin theta. That we can very easily get. How we get? Force into force multiplied by distance. Perpendicular distance is 12 sin theta. 12 sin theta into force QE. That means it is a torque equal to Pe sin theta. Okay. Well, if we have to rotate it further by an angle d theta, if the dipole is rotated through a very small angle d theta, then the work done in rotating the dipole, का मतलब क्या है कि just d theta अगर टर्न कर दे तो वर्क डन कैसे निकलेगा? टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन एंगल d थीटा. तो इसको हमने इस फॉर्मेट में कर दिया, टॉर्क की जगह ये रख दिया Pe sin थीटा. Now the work done in rotating from theta 1 to theta 2 angle अगर स्पेसिफाई किया जाए, एंगल दिया जाए, तो टोटल वर्क डन निकाल लेंगे. तो we get this expression. It is minus cos theta, integration of sin theta d theta is always we get minus cos theta. Ultimately we have Pe cos theta 1 minus cos theta 2. अब ये जो वर्क होगा ये ऐसे नहीं होगा जब तक नहीं इसके अंदर कोई एनर्जी हो. That energy is stored energy in the form of potential energy whenever dipole is placed in electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे प्लेस करते हैं इसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जो अंदर से स्टोर होता है, वो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. आफ्टर दिस हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए. सपोज वी हैव टू नो पोटेंशियल. देखिए डाइपोल और पोटेंशियल का इफेक्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हो गया. ये डाइपोल का लास्ट एक्सप्रेशन था, दैट आल्सो कंप्लीट. वी हैव टू सी द टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस. ओके, द डिटेल ऑफ इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्म, बट टुडे वी हैव टू नो एक्चुअली व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज सिग्निफिकेंस. Yes, the name capacitance
means capacity of something, that is the capacity of holding something. किसी को रखने के जो है आपके ताकत, जो हम लोग कहते हैं कि इट कैन होल्ड सच टाइप ऑफ थिंग. तो ये जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम लोग कहते हैं कि वी मस्ट हैव द कैपेसिटी ऑफ कंप्लीटिंग द बुक. ये सब जो टर्म्स आते हैं, अलग अलग रिलेटेड चीज है. तो इनसे कनेक्टेड फिजिक्स में क्या है कि व्हेन अ कंडक्टर होल्ड सम चार्ज, a different conductor can hold different amount of charge, and the charging could depend on the potential given. That means, in other words, what we call, that is, it is the charge which is always proportional to the amount of potential given to it. Okay, that means we generally say that Q is proportional to V. The charge given to a conductor is proportional to this voltage V. Okay. Now, if we have some constant of proportionality C, then C will be equal to Q upon V. This constant C is called capacitance of a conductor. Remember, it is capacitance is a physical quantity which gives the ratio between charge and voltage, and that means its unit will be coulomb upon volt, which we call as Faraday. Faraday कहते हैं इसको? No, we call it just Faraday. Why I have written initially Faraday? Because Faraday and Farad, they are two different persons. Okay, remember, Faraday is famous for electromagnetism, and Farad is totally associated with the study of capacitance and condensers. Okay, therefore he is a totally different person. Is what we call this coulomb upon volt is your Farad. It is what we call the unit of this substance. Okay, now if we want to determine the capacitance of a conductor, then what we write, we have to just raise this portion. Okay, now we observe that this is a spherical conductor of radius r. It is given a charge V, charge Q. Then potential on its surface will be 1/4 pi epsilon 0 Q upon R. Now you know that Q upon V, this ratio, we have already said that Q and V, they are interdependent, and we could say that it is the voltage which is found due to charge, and charge is found due to voltage. And here this ratio is called capacitance. This is C. C will be equal to 4 pi epsilon naught into R. From this it is very clear that larger the radius of the spherical conductor, greater will be its capacitance. Greater will be capacitance means, suppose we are having a small sphere, it can hold around 6 into 10 to the power 26 coulomb of charge. If we have a larger sphere of the same material, then it can even get more space to accommodate charges. It may have, say, 24 into 10 to the power 28 coulomb. That means you can just see that the larger the volume, larger the radius, greater will be the corresponding capacitance. Although they are nothing to do with the calculation. I am writing only the number capacitance. This much of coulomb, this is amount of charge is not to be counted here. But what is capacitance we have discussed. कैपेसिटेंस डिस्कस करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, कैपेसिटर. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस जिसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन डिटरमाइन, which can store some amount of charge, and it has always two plates. One plate is charged directly and other plate is charged due to induction. Okay, and in next lecture we will discuss the details about the capacitors
and its properties. Okay, before that, for your remembrance, I must show you the exact picture of capacitor. This is the picture of capacitor, the real capacitor which is used here. It is around its value is your 10 microfarad. Mostly we take it in microfarad, and its value is 10 microfarad. Okay, and we will also see its working, but in the next lecture only. With that, it is total. It is all about today's lecture. Okay, thank you.